Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. All right, let's wait for a few minutes because there was some issue with the link. Good morning, sir. Good morning. Let's other join. Let me drop a message that is working. So, hello, sir. Yeah. So, I have some doubts. Can I ask you now? Sure. Sir, yesterday you taught us about the dollar sign. Can you tell me what the dollar sign actually does? So your question is, what does dollar sign does? What is the use Yes, of dollar sir. sign? Okay. Yes. Let me share my screen, then I will explain. So, I have some. Can I share my screen, sir? So I go to share better. Let me first explain what is the use of dollar sign, right? So whenever we are Yes, sir. taking any reference, right? For example, I am taking a reference from cell B2. Yes. So whatever I will type here, it will be reflected in the Yes, sir. reference cell, right? Hmm. Let me put it. So if you type something over here, the same thing will be reflected in your cell where you are taking the reference from this cell, right? Now, if you drag this cell towards left, the reference will also change. So now the reference is a cell C2. So what is changing from here to Yes, here? sir. So your B2 is converting into C2. So when you are moving any reference from left to right, the column is changing, right? Similarly, when you're moving top to down, your row is changing, right? So earlier it was B2, now it is B3. Now it would be B4, right? Now, there are situations where you don't want your reference to be changed. For example, you want the same reference which is C2 in this cell, same reference C2 in B2 in this cell, right? So, and you also want to drag this formula from left to right. So what you can do while you are dragging it from left to right, you need to figure this column. So now if I drag it now, your reference would be B2. However, if you still drag it down, the row is changing, right? So row is changing from B2 to 3, right? Now if you want to freeze the row as well, you can use a dollar symbol before your row. Now if you drag it down, your reference won't change. It will always remain B2. Since we have freezed both row and column, right? So irrespective wherever you are moving this, nothing will change, right? However, if you keep one of them open or one of them free, it will change accordingly. Now tell me, is this clear? So, sir, it means the dollar B is the column and $2 is row. Is it like that? So
So $2, so not $2, B is for column and 2 is for row. And dollar symbol we use to freeze that reference. So whenever you click on any cell, this is your address. So E2 means EF column and second row. If you click here, right, this is J12. So J is your column, 12th is your row. Okay, sir. Now you want to share your screen, right? Is that the same thing or you want to share something else? So yesterday we saw the total salary calculation, and saw there we have 0.05 incentive and 0.1, 0.2, and we are only freezing the basic salary and then the 0.5 incentive, 0.05 incentive. But the value was changing overall. How this is happening, sir? Because we haven't selected 0.1% and 0.2%. I'm not sure. So I think I have a column by name of salary. And then I have something by name of incentive. And the incentives were 0.5%, 0.10. So 0.1 means 10%, right? 0.2 means 20%. Now here we have the salary. Let's say 10,000, 20,000. Right? Now total, what is the formula for total salary? Total salary equals to basic salary Basic plus salary, basic into incentive. basic into incentive. Incentive. Right? Now if I apply this formula, so what is basic salary? This is my basic salary. What I need to add? I need to add again basic salary and then multiply by incentive. 0.5. Yes, sir. Right? Yes, If I drag this over here, this calculation is done from this cell, right? However, yes, we sir. want it to be calculated on base salary. While we were dragging it from left to right, what is changing? The column is changing. For which value? For this particular value, which is D5. So what I need to freeze over here? Column. What I need to freeze here? Column. So now if I drag it towards left, I will get the right calculation. Is this point clear? Yes, sir. Why I have freeze only B? Because So, in my calculation, I want this value to be same across all three calculations. okay, sir. Right? Now I am dragging this from top to bottom. Now I am getting some weird result, right? Why? Now if I check this, so my column of my row for C3, for
C2 is changing to C3, and I don't want this to change from third row, right? I want, sorry, second row. So what I want here, C2, 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 right? So which value I need to freeze? This two things, right? Or the row. Sir. Now if I drag it, I will get the correct calculation. Now my formula is ready. I can drag it here. I can drag it here. I can drag it anywhere, right? I will get the right result. So the result we got is according to C2, the incentive 0.05. Is it right? For this column, it is C2. For this column, it is D2. For this column, it is Okay. E2. Okay. So while I was, making this formula, I checked this. Only I need to freeze B part to freeze this. I don't want this C to be freezed because here I want value of D. So it is automatically changing. It is also changing. Okay. सर अगर इंसेंटिव वाला जो कॉलम है अगर ये वर्टिकल होता तो सर कैसे होता सर मैंने ट्राई करा था मतलब आंसर नहीं आया था एक बार यार अगर करके बता दो तो इसकी वैल्यू कहाँ चाहिए अब ये बताओ। सर जैसे मतलब यही वाला फॉर्मेट है ऐसे ही चाहिए मतलब सर तो आप बोल रहे हो टोटल सैलरी 5% से कितनी होगी टोटल सैलरी, 10% से कितनी होगी टोटल सैलरी, 20% से कितनी होगी, राइट। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखोगे, दिस प्लस दिस इनटू व्हाट, दिस, राइट, एंटर। Now if you drag this formula top to bottom, the calculation is changed from 5 to 10%, right? यस सर Which you do not want. So what you need to freeze here? This thing, right? यस सर But to drag this formula from this side to this side, your salary is changing. So what you also need to freeze your salary. Right? Now if you again check your formula. Now what is happening in this case? Your percentage of incentive is also changing. Right? So what you need to do? You need to freeze the column itself. However, when you move it from left to right, right? So you need to unfreeze this thing and you need to change the value of this 5 to 6. Again, you need to change this value 6 to 7. So here you are making formula 3 times, right? सर
I can do this thing with a single formula itself, but that is a very long trick, and that will be a little advanced thing for you right now. So that can also be done with a single formula itself, right? But for now, you can consider this. Since this is given in a column, and while you will drag it from left to right, your value will not change from top to bottom. It will always change from left to right. So it is always advisable, if you have to do this kind of operation, do one thing: copy this column and press Alt ESE, which means you need to transpose your value. So your column will become your row, like this, and then do the calculation. Sir, what was the shortcut? Alt ESE. So you copy the value, right? Copy the value, press Alt, don't keep it no, press, just press once and leave it, then press E, then S, then E. Done? Yes, sir. Okay, so this is about, the cell reference, right? Excuse me. Now some more thing, right? So we are going to talk about the formulas, right, which we will be using. Very frequently, right? And formula is the the heart of your Excel, right? So for example, let me create some data. Ah, excuse me, sorry. Right? So if you have to do some calculation, right, the first calculation which everyone can do is sum, right? So while you are on this cell, press Alt equals to, a formula will be auto populated, and which is sum, right? So you have a sum from value B2 colon B4. So now B2 colon B4 means that is the range of the value. So you can use a range of values in your formulas. Let me add few more values.
right? So now the range is B2 colon B6. So whenever you need to, give reference to multiple values, you can use range. I can do the same thing by using sum this comma this comma this comma this comma. This will also give you the same real versus is equal to sum of this range. Did you get the difference between these two? No, sir. Now, whatever formula Yes, you I have got it. you can drag it towards right. Now the cell reference for column will change automatically. Right? Yes, sir. Any question till now? ये सम का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ कॉलम के लिए एप्लीकेबल होता है? फिर से बोलना. ये सम का फॉर्मूला सिर्फ कॉलम के लिए एप्लीकेबल है? Okay. रो वाइज भी करना चाहते हैं तो यू कैन यूज रो वाइज. तो फॉर्मूला को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कहाँ लगा रहे हो, राइट? इट इज ऑल अबाउट द रेफरेंस. आप किस सेल का रेफरेंस दे रहे हो. Sir, we should write the sum by using the keyword, or सॉरी. we should write the sum by using the keyword, or there is any tool by using that we can write the sum. No, you can type it manually sum. Right? It will show you what all formulas there with the name of sum. Okay, sir. And then you can select reference manually. And you can drag it below, you can drag it upward. All right. Yes, sir. Okay. Now there is a formula by name of count. Now let's talk about the count. So if we type a formula count, COU, and you take the reference of the cells, right? The answer is 0. However, if you drag this formula towards right, you will get your answer as 6. So count returns, right, the number of cells where you have numeric value.
काउंट से क्या मालूम चलता है? उन सेल्स का काउंट मालूम चलता है जहां पे न्यूमेरिक वैल्यू होगी. So let me delete one of the instance. Right? So this is count. Now we have second formula which is count A. Now if you apply this count A and use the same reference, it is giving the sum of all the values irrespective of numeric or character. Now you have another formula, count blank. So count blank counts the blank cells. So now you know the difference between count, count and count blank, right? Any question on this? No, sir. Count blank. So count blank will count the blank cell. That's why you're getting answer as 1. Right? Yes, sir. Now why we are seeing 0 here? However, we have a blank cell over here. Anyone? So can you repeat the question? So why this is 0 not 1? We are using the same formula, right? Anyone? Do we have Adarsh Thakur here? Because I do see his message. Yes, sir. I'm here. Okay. Hi, sir. Yeah, I'm here. I think everyone is not on their Telegram group, right? No, sir. Oh, there are only 14 members. However, I can see 21 people here. So please join that group so that you receive all the communication. Even I am also using for Telegram first time, right? So it is little uncomfortable for me to switch from WhatsApp to Telegram. But thing is that that is the official channel, so you need to join that to get all the official communication from Ivanticus. All right. Now, so none of you are able to answer this thing. Why this is
0 not 1, right? किसी ने काम किया नहीं है इसका मतलब एक्सेल पे ज्यादा. No, sir. Okay, so this is one of the biggest problem in Excel, not particularly Excel, with data. At times your value contains one special character, which is space, right? So this cells contains space. How do I know? You see the cursor is blinking at second place. Now I Yes, am sir. pressing the back key. Now see the cursor, right? The moment I press the enter, your value is now 1. So that space, because of that space, this particular cell was not blank. Okay, sir. And in most of the places, you will find this evil character which will spoil your formulas, right? And you will be struggling why you are not getting the right answer, while you are seeing something, but there is something else which is you are getting as an output, right? Just like this case. So be very cautious about the space in your data. So whenever you face this kind of problem, right? Let me share one trick over here. So what you can do, you select this data, right? Press Control H. Remember, only select the relevant data where you want to remove blank. Oh, sorry, this space. So in find what, press tab so that you can find a blank. Sorry, a space, and replace it with a blank, and press replace all, and see the magic here. That all done, we made one replacement, and press OK. So with the help of find and replace, you can replace any value. For example, if I select this name, and in place of A, I am changing the value with @. It is saying that we could not find A. Find all A is there, right? All the S is changed, and you want to revert back on the same situation. Okay. Redmi Note 7. Let me change the setting. सर एक बार फिर से समझा दीजिए Sorry, सर ये कंट्रोल एच वाला find and Control replace H वाला wala. Yes. Control H if you want to replace anything. For example, in this Control H, you want to replace सर वो सेल वाला बता दीजिए इसमें स्पेस वाला आया था voila. So select this data, press Control H,
and find what? Press tab, not tab, sorry, this space bar, and replace it with a blank. Sir, what if there are two space? It will be replaced. Same case. Yes. So let me help you with that as well. 1, 2, 3, 4, 5. Here we have a space. All done, we made 5 replacements. Done? Yes, sir. Any question on this piece? No, sir. Okay. Yes, Now the next thing which you are going to do, we are going to run some new formulas on this data. So the next formula is average. Now you can use average you are getting an error, division error. Why? What is an average? What is the formula of average? Average. Total Sum of divided. all elements divided by number of elements. Divided by count of all element, right? Yes. Apart from average, you have some other formulas. Let me share with you. Median, right? So what is median? Middle value of the elements. Right? Yes, sir. And why are you getting an error over here? Applicable for numerics only. Yes, it is only applicable for numeric, right? Yes, sir. Okay, and mode. What is mode? What is mode? The maximum number of the maximum thing that is appearing in the list. That Maximum is count mode. of a number. Or most frequent value, Yes, sir. right? A value which is coming maximum number of times, right? yes, sir. So, okay, here you are getting 33. Why you are not getting any value over here? Because there is no repeat value. There is no Non-repeated value. single value which is coming at Repeated. maximum number of times. So all the values are coming once. So there is a tie, there is a conflict, right? Yes, sir. So how can you select a value which is coming at maximum number of time when every value is coming only once? Right? So that's the reason you are not getting an Yes, sir. output.
So average you understand, median you understand, mode you understand, right? Yes, no, maybe. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. कोई है जिसको ये तीनों टर्म समझ में नहीं आते हैं? सर मीडियन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. So median is a middle value. So let's say if you have so you have these many value and you need to find the median of this value. So if you have even number of value, right? So how do we find median? So सबसे पहले what we do, we sort the value, right? And if you have odd numbers, then middle value will be the median. Otherwise, average of these two value would be the median value. तो सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं. अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है तो मिडिल वैल्यू आपकी मीडियन होगी, और अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है तो मिडिल टू वैल्यूज का एवरेज वुड बी योर मीडियन. Median. ओके सर. क्लियर है? यस सर. Let's say you add something over here and you change the formula. तो मिडिल वैल्यू क्या रही है? 34. Yes, sir. ठीक है? Okay, let me move on to the other formulas. Okay, min max सबको समझ में आता है? Yes, sir. Minimum, maximum. Yes, sir. Minimum, maximum. Right? Okay, now tell me what is this value? This minus this. इस वैल्यू का नाम क्या रखूं? Reference. So range. क्या है? Range. Yes, thank you. What is this value? This is Range. known as range. Range क्या होता है? Maximum minus Minimum. minimum, right? All right. Now we will be moving on to some more formulas. There is a formula by name of count if. Right? So count if means what would be the count if this condition satisfies. For example, let me select this range and I'm putting a criteria Sachin.
right? So let me add Sachin one more time. So what is your count? 2, If the name is Sachin, 2. 2. So you are getting your count when a certain condition is fulfilled, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. Now, second, I can ask you, what is the count if the value is greater than 3. 3, sir. 3. 2? 3, sir. Value is greater than 40,000. So do you see that I put the condition in quotes, right? सर वैल्यू एंड से लिखते हैं, Value आपने एंड सिंबल And यूज use किया किया. था सर, and symbol use किया. उसको एम्परसेंट सिंबल बोलते हैं. ओके सर, तो वो उसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन वैल्यू के लिए है. नहीं नहीं नहीं, यूज नहीं किया ना मैंने. उसका एक दूसरा यूज केस है, मैं वहां बताऊंगा. ओके बेसिकली वो यूज होता है कॉन्कैटिनेट करने के लिए. जैसे मैंने ये लिखा ना, दिस ओके एम्परसेंट दिस, तो ये दोनों जो वैल्यूज को क्या दो करेगा, वैल्यूज को मर्ज करना, मर्ज. कॉन्कैटिनेट कर देगा, राइट? ओके सर. तो आपने दो तरीके सीखे. एक आपने डायरेक्ट कंडीशन पास की यहाँ पे, एक आपने ऑपरेटर के साथ कंडीशन. ऑपरेटर क्या है आपका? ग्रेटर देन का सिंबल, राइट? इफ आई चेंज इट टू लेस देन, okay, so there is a trick. Name, count, right? So you want to display a name here and you want to count of that. For example, if I write a Sachin here, count if and the credit is this, right? Now you can create a drop down list here. What you can do, you can create a drop down list here. So to create a drop down list here, you need to click on data, go to data validation, click on data validation, data validation, right? And allow list and the source, select this column. And press OK. Now, do you see this small icon? So now you have automated your formula, right? Let me add few more values, right?
Now what you need to change? You need to change your formula here, which is automatically changed because you have inserted the row in the middle. तो फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो गया, right? So now you click on Sachin, click on Rahul, click on Rohit, right? So now what you have done? You have automated your formula, right? To give you the output on the basis of selection. ये clear है? Yes, sir. Clear. So data validation and list, and then okay. List and the reference. Okay, so reference नेम पूरा सिलेक्ट होगा ना, तो मतलब जिसको जो हमने बेसिकली जिस भी चीज को आपने लिस्ट बनाना है वो Okay. वैल्यू आपकी रेफरेंस बन जाएंगी, वो सोर्स में जाएगी, सोर्स. वो सोर्स में जाएंगी. यस. ओके. नेक्स्ट इज योर काउंट इफ्स. एक फॉर्मूला जिसका नाम है काउंट इफ्स, राइट? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्राइटेरिया रेंज 1. तो आपने क्राइटेरिया रेंज ये सेलेक्ट किया और बोला कि इसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए. ठीक है, अगर आप ऐसे क्लोज कर दोगे तो आंसर 3 आ जाएगा. देखिए इफ्स का मतलब है आप इसमें और भी कंडीशन लगा सकते हो, राइट? तो आपने क्या किया? आपने एक एज कॉलम भी सिलेक्ट किया और यहाँ पे बोला कि इसकी एज ग्रेटर देन 33 होनी चाहिए, राइट? तो पहले जो रोहित मेरे पास आ रहा था 3 आ रहा था, अब काउंट कितना आ रहा है? 1. तो आपने क्या किया? अब मल्टीपल कंडीशन लगा दी. काउंट इफ्स में क्या किया आपने? 2 कंडीशन लगाई. पहली कि नाम तो होना चाहिए रोहित, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? एज 33 से बड़ी. तो रोहित कितने हैं डेटा के अंदर? 3. देखिए इस कंडीशन को कितने रोहित मीट कर रहे हैं? 1. सिर्फ 1. This is how you can use or you can put multiple if condition. You can use them more than one condition. You need to use count ifs. Question on this? No, sir. सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स मिला मेरे को अभी तक. बाकी लोग अभी No, sir. No, sir. नो सर. नो सर. No, sir. अब इसको भी ऑटोमेट करते हैं, राइट? नेम तो नेम के लिए क्या डालूंगा? अगर एज इससे बड़ी हो, नेम ये हो, तो काउंट यहाँ आना चाहिए, राइट? तो इसके लिए वो क्या बनाना है? डेटा वैलिडेशन में गया, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, और सोर्स के अंदर क्या सेलेक्ट कर लिया? ये लिस्ट, राइट?
एज में भी यही क्या आया, डेटा, डेटा वैलिडेशन, पिक लिस्ट एंड सोर्स में एज। तो नेम हो सचिन और एज होनी चाहिए 35 से ज्यादा, राइट। तो उसके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना रहा हूँ इसके लिए, COUNT काउंट इफ, क्राइटेरिया रेंज क्या है, नेम क्या चाहिए, ये वाला, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, ये है, और सेकंड क्राइटेरिया क्या है, greater than 35. Age greater than 35. ग्रेटर देन दिस, राइट। तब भी 0 है, राइट। इसका मतलब फॉर्मूला आउटपुट सही नहीं आ रहा है। तो वो इसलिए नहीं आ रहा है कि जब भी हम इस तरह के सिंबल्स यूज करते हैं उसके बीच में हमको एम्परसेंड लगाना पड़ेगा। एम्परसेंड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो ऑपरेटर है उसको कॉन्कैटिनेट किया किसके साथ, अपने सेल रेफरेंस के साथ। अब सचिन, सचिन, एक सचिन की एज 32 है, इसलिए ये क्राइटेरिया मीट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे 2 आया है, राइट। जैसे अगर मैं ये यहाँ पे नाम रोहित सिलेक्ट करता हूँ, रोहित भी 2 है, जिसकी रोहित, हाँ जी, ये आया समझ में। क्या चेंज किया मैंने, सिर्फ अगर मैं किसी सेल का रेफरेंस ले रहा हूं और मुझे कोई ऑपरेटर यूज करना है तो मेरे को बीच में क्या लगाना पड़ेगा, एम्परसेंड। अब इससे क्या हो गया, जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। डायनेमिक इन द सेंस मैं किसी भी वैल्यू के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे किसी भी वैल्यू के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ। Right, sir, right. क्वेश्चन ऑन दिस। सर इसमें हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू यूज करना है तो यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ साथ क्या लगा दो, इज इक्वल टू। ओके सर। पहले 0 था, 1 आ गया, ओके। सचिन की एज 36 होगी कहीं ना कहीं। यस सर, ये 10th नंबर पे, 8 10 पे। ठीक है, यस सर। क्लियर है यहाँ तक। एक बार प्रैक्टिस कर लो Yes, अपने sir. पे। And do let me know once done.
Done? No, sir. Anyone who have completed? Yes, sir. Done? सर नेम वाला हुआ है अभी एज का. Sir, done. Okay.
सर नहीं हुआ ए सर, एज का फॉर्मूला नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। व्हाट अबाउट अदर्स? सर हो नहीं रहा है, मैं लगातार ट्राई कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा है। सिंपल सर थिंग राइट? होने वाला सर। हाँ सर, ये एंड वाला रह गया, काउंट इफेक्ट्स। आप करके देखो। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। यस सर, एरर आ रहा है सर। एरर क्या आ रहा है? तो सेकंड वाला नहीं आ रहा, एरर एरर शो रहा है। यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा एरर आ रहा है सर। सर एक बार फर्स्ट वाला ही बता दीजिए, काउंट इफ वाला। हेलो। डन सर। फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। अब देखो गलती कहाँ हो रही है। सर आपने ये L4 क्या यूज किया है? L4 कहाँ पे है? I4 है ये। सर I4 सर। तो ये है I4 सचिन। सर एक बार आपने काउंट इफ पे आप फॉर्मूला दिखा दीजिए। काउंट फिर ये वाला भी देखना चाहते हो? ये वाला भी देख लो। सर हो गया। सर पहले वाले का फॉर्मूला एक बार दिखा दीजिए। सारे ओपन कर दिए मैंने फॉर्मूलास। सर हमने I4 का यूज क्यों किया सर? इसका सर हमने यहाँ पे I4 रखा है ना सर, हाँ, ये वो सर पहले क्यों रखा? ओके। So whenever you write count if, right, it asks you the criteria range 1. आपने पहला क्राइटेरिया क्या दिया? ये नेम होना चाहिए।
ये रेंज दिया इसमें, राइट? यस सर। तो उस रेंज में से कौन सा नाम चाहिए आपको? ये नाम, ठीक है। जो आपने ये सेलेक्ट कर लिया पहले और आपने नेम दे दिया सचिन, एक ही है ना? तो बाद में अब क्या रहा है आपका दूसरा ऑप्शन, क्या रहा है? आप दूसरी कंडीशन लगाओ जहां पे आप क्राइटेरिया की रेंज Excuse नंबर me, 2 sir. दे दो। सर स्क्रीन मेरे में वर्क नहीं कर रही, तो मैं क्लास एग्जिट करके एक बार ज्वाइन कर लूं? हेलो। अभी देखो, सॉरी, हाँ सर, अब हो गया। यस सर, अब दिख रहा है। इट वाज फ्रीज फ्रॉम माय साइड, सॉरी। ओके ओके। सो बेसिकली जब आप काउंट इफ की कोई कंडीशन लिखते हो ना, काउंट इफ्स, इट आस्क यू फर्स्ट थिंग व्हिच इज क्राइटेरिया रेंज। आपको क्या रेंज चाहिए जिस पे कंडीशन लगानी है, वो यहाँ लिखी आपने। और सेकंड ऑप्शन क्या देते हो आप? क्राइटेरिया। उसके बाद आप क्या बोलते हो? मेरे को दूसरी कंडीशन भी लिखनी है, तो उसके लिए ये लो रेंज और ये लो मेरी कंडीशन। बस इसी चीज को मैंने क्या किया, डायनेमिक बना दिया यहाँ पे रेफरेंस दे करके। तो जहां पे I4 देख रहे हो वो क्या है? सचिन, इस कॉलम का रेफरेंस है। और J4 देख रहे हो वो एज का रेफरेंस है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। हाँ सर, इसमें भी हमने ऑपरेटर यूज किया, तो एंड एम्परसेंड साइन यूज नहीं करेंगे? जब मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं तो एम्परसेंड की ओके जरूरत नहीं है। जब मैं रेफरेंस लेता हूँ ना, ओके सर। ओके जैसे 33 में डायरेक्ट लिखा, जबकि यहाँ पे J4 यस में 33 रेफरेंस के थ्रू ले रहा है, तो एम्परसेंड आएगा। रेफरेंस। ओके सर, ठीक। डन सर। सबको हो गया? यस सर, हो गया। सर एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं मैं भी एक बार?
someone is saying something? मेरा थोड़ा नेट हाँ, अनस्टेबल था. सर एक्चुअली एक बार स्क्रीन शेयर करनी है, मैं कर दूं सर एक बार, कुछ डाउट था सर. ओके. सर इसमें ना जैसे एक तो रेंज में प्रॉब्लम आ रही है. रेंज में क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मैंने इसमें फॉर्मूला पुट तो किया है. एक सर काउंट सर रेंज सही है 18 नंबर पे सर. 18 में हमने क्या फॉर्मूला लिखा? काउंट इफ B2 to B6 राहुल होना चाहिए एंड बीट. पर एक बार बताइए कैसे पॉसिबल है कि B2 से B6 के अंदर राहुल नाम मिलेगा आपको? हाँ, A2 से A6 में होना चाहिए था. हाँ जी. एंड सर काउंट इफ के अंदर एक बार सर चेक कर लीजिए, इस पे मैंने फॉर्मूला पुट किया था, उसमें भी नहीं हो रहा था सर. इसमें भी वही गलती है ना? कौन सा ऊपर वाला दिखा रहे हो? हाँ, काउंट इफ दिखाओ, वहां क्लिक करो. सर इसमें हो नहीं रहा है. एस्केप, पहले एस्केप प्रेस करो. एस्केप की. सर ये पुट कर. हाँ, जो राहुल लिखा है ना उसको कोट्स में लिखो. ओके. कभी भी टेक्स्ट किसी भी कंडीशन में ऐसे ही नहीं जाता. टेक्स्ट हमेशा कोट्स के अंदर जाता है. ओके सर. देखो उसे. सर ये डाउट है सर. Okay, let me share my screen. होपफुली सबका होगा. कोई है जिसका रहता है अभी? सर एक बार डायनामिक बनाने वाला फॉर्मूला बता दीजिए. ओके, एक सेकंड. Alright, so Okay. let's. पहले मैं आपको कंडीशन नॉर्मली लिख रहा हूँ, राइट, विदाउट किसी सेल रेफरेंस के. ओके सर. तो मैंने काउंट इफ्स लिखा. राइट. मैंने पहली कंडीशन के लिए रेंज सेलेक्ट किया, कॉमा, और मैंने क्या कंडीशन दी? SACHIN सचिन. राइट. ओके सर. सेकंड कंडीशन के लिए मैंने क्या किया? रेंज सेलेक्ट की और उसमें मैंने कंडीशन दे दी ग्रेटर देन लेट्स से 33. राइट. ये हो गया मेरा नॉर्मल मेथड जिसके थ्रू मैं काउंट इफ की मल्टीपल कंडीशन पास करके काउंट कर सकता हूँ. राइट. ओके सर. नाउ इफ आई हैव टू मेक दिस डायनेमिक, तो जहां पे भी मैंने काफी कंडीशन को हार्ड कोडेड किया है, इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड. किसी वैल्यू को हम डायरेक्टली लिखते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड कोडेड किया हुआ है. यानी कि ये फॉर्मूला सिर्फ इसी वैल्यू के लिए चलेगा. उसको अगर डायनेमिक बनाना है तो क्या करना होगा? जहां पे मैंने हार्ड कोडेड किया उस जगह पे क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस यूज करना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया? सचिन हटा करके उसकी जगह पे इस सेल का रेफरेंस दिया. ठीक है जी. अभी भी सेम आउटपुट है. यस सर. अब आते इस वाले पोर्शन पे. अब इस वाले पोर्शन को जब मेरे को डायनेमिक करना है तो इस कंडीशन को मेरे को जब किसी सेल को रेफरेंस करना है तो उसके साथ मेरे को उसको एम्परसेंड लगाना होगा और उस सेल का हम रेफरेंस दे देंगे. एंटर. राइट. यस सर. हो गया डायनेमिक. यस सर. सर विद इन सेल अगर ये फॉर्मूला लिखें तो नहीं आ रहा है. विदिन सेल फॉर्मूला कैसे? बार मतलब जैसे काउंट के नीचे जहाँ 1 है जो हमने पहले हार्ड कोडेड किया था,
सचिन की जगह अगर हम इस पे क्लिक करते, नेम के जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, तो सर वो क्लिक नहीं हो रहा है। नहीं, मैं या ऐसे सिर्फ नहीं समझ, मेरे को सर आप सिर्फ तो या तो फॉर्मूला बाद स्क्रीन में ही शेयर होगा। करो, स्क्रीन शेयर करो। यस सर। यस सर। सर जैसे यहाँ लिखते हैं, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर सर नेक्स्ट जो, हाँ, आपने बीच में कॉमा नहीं लगाया वहां पे, पता है? उसके बाद कॉमा लगाना था जब आपने J6 को सिलेक्ट किया था ना, ये कॉमा J6 अगेन कॉमा। कॉमा, अब कॉमा लगाना है, फिर सिलेक्ट कर पाओगे आप उसे। फिर कॉमा, अब जो आपको एज की कंडीशन लिखनी है। सर इस पे क्लिक करके ये जो K6 आ रहा है ये इधर से नहीं होगा? लेकिन अब होगा क्यों नहीं होगा? लेकिन अब कंडीशन ये बनी है कि आप B4 से B16 के बीच में सिर्फ क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए वो। यस सर। 24 बराबर, कम, ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहे हो आप। ओके, दिस विल बी ग्रेटर देन, करो ब्रैकेट में। अब एम्परसेंट क्यों लगा रहे हो, है ना? अब आप दो चीजें बोल रहे हो। आपने कंडीशन तो पूरी लिखी थी ना वहाँ पे, ग्रेटर देन 24। या तो आप ग्रेटर देन का सिंबल लगाओ, यस सर। 24 हटाओ वहां से, ओके, इसको कोट्स में डालो। अब एम्परसेंट लिखो, अब 24 का रेफरेंस दे दो, अब ब्रैकेट बंद करो। ठीक है, 23 सिलेक्ट करो, 23 साहिल 23। साहिल की एज है ही नहीं सब कभी। रोहन, हाँ, सब रोहन आ जाएंगे। यस सर, ठीक है, ओके सर। ऑलराइट। आई होप अब सबका हो गया होगा, राइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Let me share my screen again. Now, what if you're given a data like this, जहाँ टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, राइट? यहाँ पे टेक्स्ट भी है और नंबर भी है। अगर आपको सारे टेक्स्ट एक ये पता लगाने के इस कॉलम के अंदर मेरे पास कितनी वैल्यू है जो टेक्स्ट के अंदर है, तो कैसे लगाओगे? एनीवन? Count use करेंगे. काउंट है, Count है. काउंट है। काउंट इफ, काउंट ए। काउंट ए। ए, yes. यस। तो काउंट ए में क्या आ गया? 17। आप सही बोल रहे हो, काउंट है तो सब कुछ काउंट कर देगा, जबकि मुझे क्या काउंट चाहिए? टेक्स्ट। टेक्स्ट। तो अगर ओनली काउंट, ओनली। देन मैं क्या करूंगा? काउंट
आ गया ना? Yes, sir. अरे एक बार फिर से बताओ। अरे कुछ नहीं किया मैंने आपको जो दो फॉर्मूले बताए थे वो दोनों यूज कर लिए। एक जगह एक बार काउंट यूज किया, एक जगह काउंट ओके ए से ओके मैंने सर। टोटल को काउंट कर लिया, लेकिन उसमें से न्यूमेरिक घटा दिया। अब क्या ये काम मैं काउंट इफ से कर सकता हूँ? तो द आंसर इज यस। काउंट इफ कॉमा स्टार रिप्रेजेंट्स टेक्स्ट, राइट? इससे क्या क्या काउंट होगा? सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वाला डेटा। सर न्यूमेरिक वैल्यू के लिए कौन सा वो है मेरे सिंबल? लिए तो है ही ना काउंट, COUNT काउंट। अगर इधर M% लगा दे तो सर? सर जो आपने पहला फॉर्मूला यूज करा था सर, उसमें काउंट मतलब सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को निकाल देता है। हाँ जी, काउंट फॉर्मूला है ही न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। सर ये जो स्टार आपने यूज किया है ये प्री डिफाइंड है टेक्स्ट के लिए? हाँ जी। ओके सर। Done? Yes sir. And if you want to Yes, sir. use, right, if you want to calculate only text, right, only numbers using count if, what you can do, you can put not equals to symbol in your formula. So this denotes not equals to star. Now how to count all the text data which is starting with R, right? So count if, select your range, comma, R and star, which means first character should be R.
Excuse me, sir. अगर आर सिर्फ आर यूज करें और टेक्स्ट सिंबल नॉट यूज करेंगे Excuse me, sir. इसका मतलब पता है क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए यहाँ पे हाँ आर। ओके थैंक यू सर जो ये 7 आंसर आया था इसका, नॉट इक्वल टू क्या था इसमें? नॉट इक्वल टू स्टार. नॉट It इक्वल means टू text. स्टार। It means text. यस, नॉट इक्वल टू टेक्स्ट। सर वो तो फिर काउंट से भी आ सकता था हाँ, ना? काउंट से भी आ सकता है, मैं मना ओके नहीं कर रहा हूँ। ओके ओके. Now count if your second character is A. Question mark A star क्वेश्चन this will return the count of all the characters which has second alphabet as A. So this question mark is a placeholder, right? So here you can have any value. So A is the second character, so the second character should be A, and star means after that you can have any character. ओके सर अगर ए को थर्ड पर जो आगे 2 क्वेश्चन मार्क लगाना है सर एक बार वापस बताइएगा. तो ये क्वेश्चन मार्क इज योर प्लेस होल्डर, यानी कि एक जगह मैंने खाली करके रखी हुई है, इस जगह पे कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन मार्क भी इसीलिए कि दूसरी जगह पे भी कुछ भी हो सकता है। एंड थर्ड कैरेक्टर इज ए, राइट? और ए के बाद जो आपने स्टार लगाया उसके बाद कोई भी कैरेक्टर और कितने भी नंबर पे होना चाहिए। सो दिस इज नोन ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। सर ये बात नहीं समझ आई। कौन सी बात? स्टार के बाद कोई भी नंबर किसी भी जगह पे। हाँ, स्टार इसलिए यूज हुआ है कि उसका मतलब है कोई इस ए के बाद कुछ भी आ सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कितनी भी लेंथ में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीडीए लिखा है मैंने, अगर मैं यहाँ पे ऐसे रखूं तो भी मैं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार की वजह से ये है कि इसके बाद भी कुछ भी होगा तो भी चलेगा। और अगर ये मैं स्टार हटा दूंगा
तो काउंट 1 आएगा, और 1 कौन सा होगा, ये वाला। एग्जैक्टली ये इस पैटर्न को सिर्फ एग्जैक्टली ये वाला स्ट्रिंग मैच करता है। यस सर। ओके सर। राइट, लेकिन आपको वो सारे इंस्टेंसेस कैलकुलेट काउंट करने हैं जिन पे सेकंड कैरेक्टर थर्ड कैरेक्टर आपका ए होना चाहिए, तो फिर एक के बाद आपको स्टार लगाना होगा, क्योंकि एक के बाद कुछ भी आ सकता है। तो सेकंड प्लेस के लिए सिंगल क्वेश्चन मार्क, थर्ड प्लेस के लिए डबल क्वेश्चन मार्क, तो फोर्थ प्लेस के लिए फिर 3 होंगे। क्वेश्चन मार्क का जिस भी प्लेस पे मुझे वो चाहिए उससे -1 ना, जैसे मान लो 5 चाहिए तो उतनी हाँ। टाइम हम लोग ठीक है। ओके सर। काउंट इफ सेकंड लास्ट कैरेक्टर इज ए। मान लो ये डेटा है, अगर सेकंड लास्ट कैरेक्टर अगर ए निकालना है तो ए के बाद लगाएंगे। सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए। तो क्या ये लॉजिकली सही लिखा है? सर सही है। नहीं सर, सर स्टार बाद में आएगा ना, क्यों? ए के बाद स्टार आएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर का मतलब ये सर ए से पहले कुछ भी हो, लेकिन लास्ट सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए, और उसके बाद सिर्फ एक ही जगह एक ही प्लेस पे कुछ होना चाहिए। सर इसमें अकाउंट फ्रीज क्यों हुए? इसमें सेल फ्रीज हुए हैं ना, लेकिन फॉर्मूला डॉलर साइन लगा हुआ है। हाँ, वो नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक। बट इट्स अ जनरल प्रैक्टिस कि जब भी एक्सेल में हम लोग रेंज सेलेक्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको फ्रीज कर देते हैं, ताकि मेरा फॉर्मूला कोई ड्रैग करे तो वैल्यू चेंज ना हो। बट अगर मेरे को वैल्यू जो रेंज डायनेमिक रखनी है तो मैं फिर उसको कभी फ्रीज नहीं करूँ। ओके सर। Now count if any name contains R. Who can build this formula? सर कंडीशन में स्टार आर स्टार। Very good. तो अगर वो कुमार है तो स्टार कुमार स्टार। Now this condition where all names should have only 3 characters. थ्री क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क एंड स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। कोई करके देखो ऐसे। सर व्हाट्स द क्वेश्चन? So count all the names which only contains 3 letters. सर 3 क्वेश्चन मार्क। Perfect.
3 क्वेश्चन मार्क कैसे हुआ? यहाँ तक सब क्लियर है? सर ये वाला बता दो, ऑल नेम ऑफ 3 कैरेक्टर जो होते थे। तो 3 क्वेश्चन मार्क कंडीशन कॉमा 3 क्वेश्चन मार्क मतलब 3 प्लेसेस में कुछ भी हो। सर जो बेसिकली जो क्वेश्चन मार्क हम यूज कर रहे हैं वो नंबर कैरेक्टर दोनों के लिए, नंबर एंड अल्फाबेट। अल्फाबेट ओनली फॉर अल्फाबेट। एक क्वेश्चन मार्क जो है वो है आपका प्लेस होल्डर, उस प्लेस पे कुछ भी होना चाहिए, राइट? लेकिन वो जो 3 प्लेस की हम बात कर रहे हैं वो एंड दिस प्लेस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन अल्फाबेट, नॉट फॉर नंबर। यस सर, तो क्वेश्चन मार्क ही यूज करेंगे। यस। सर स्टार भी क्योंकि अल्फाबेट 3 डिजिट टेक्स्ट के लिए तो हम स्टार यूज करते थे, टेक्स्ट अल्फाबेट में ही हो गया। हाँ, let me see if I have your attendance sheet. This is PGA 17, right? Yes, sir. I don't see your name. PG 11, PG 12. Give me a second. Let me call Damini. मैम ये PGA 17 की अटेंडेंस शीट आज आप लगा दोगे? ठीक है, ठीक है। So Damini will take the attendance from the video itself. Okay. All right. A couple of things before I move on to the next topic. Right. So from where you will learn Excel, right? So this is a continuous process. So learning is a continuous process. तो ऐसा नहीं है कि अगर एक टॉपिक खत्म हो रहा है तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, राइट? सो अभी मैंने बेसिक चीजें आपसे कवर की, बट टुमारो आई विल स्टार्ट समथिंग एडवांस, राइट? लाइक पिवट, इफ कंडीशन, ऑल दोस थिंग, राइट? बट आपको ये एक्सेल इज अ बिग थिंग, राइट? बिग थिंग, व्हेन आई से बिग थिंग मतलब इसको आप जितना मर्जी करते रहो, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, राइट? इसको सीखने के लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद से भी करनी होगी। उस प्रैक्टिस को आप कैसे कर सकते हो? Either you go to some website or YouTube channel. So one YouTube channel which I found very useful when I was learning. So let me check that Excel is fun, right? So this, you can see their subscriber base, you can see their videos, right? One of the more, most prominent or most reliable channel. So on this channel you can go to playlists. In this playlist you will find this playlist.
I am visiting this site after long. So let me see. There is a playlist of basic Excel. Yes, this one. So this basic Excel course, right? See, this one. Right? So you can learn, you can watch these videos very easy, very basic, right? So that will help you. Let me put this link in the chat box. But remember one thing, do not, switch channels, right? And by the way, that I am not promoting this channel. I am only promoting it as this. I was learning from this channel some time back, so I found it helpful. That's why I'm sharing with you people. And I have shared this with almost with every class, and I found a good feedback. So that's the reason. Second thing, Excel is very vast topic, right? So please do not jump from one topic to another topic and switch one channel to another channel. Go to any channel, right? Not this only. If you found some other YouTube channel where you find it's helpful, or some website which is helpful, please follow only one source of information, right? Is that clear? Okay, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. And why I'm saying only watch one channel, because uh, so it's an ocean, right? YouTube is an ocean, and you will get lost. It's a big jungle, right? You will get lost into the jungle if you keep on clicking and looking for new information. So only stick to one channel or one source, and that's it. Now, second thing, Excel or any other skill which we are going to cover in this program, right? Mark my word, you will only be able to retain that information if you are doing it yourself. And I have shown you this practical example many times. मैंने जब भी आपको बोला कि आप करके देखो, you all are struggling, right? Yes, sir. Yes, sir. And this is bound to happen. ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, right? ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा. And why it is happening? Because you are acquiring one skill. So I connect or I give one analogy for this learning. जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, if you remember those days, तो क्या हुआ था? Yes, sir. आप गिरते थे, Yes, sir. right? बट क्या आपने साइकिल चलाना बंद कर दिया था? No, sir. No, sir. Right? So similarly, same thing will happen with you while you are learning this all these new skills, right? आपको समझ में नहीं आएगा, आप गिरोगे, लेकिन अगर आप continuously practice करते रहोगे, there will be one day when you do not require any support and you will be your own. ठीक है? और वही मेरा पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है कि एक दिन मैं आपको इस कंडीशन में ला दूं जहाँ पे आप खुद से सब कुछ कर रहे होगे, राइट? और उसके लिए आपको क्या करना होगा? खुद से ही प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप करोगे तो ही ये आपको फायदा करने वाली है. ये बुक पढ़ के कोई एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है. आपको किसी ऐसे इंटरव्यूअर के आगे बैठना है जो आपको घुमा घुमा करके चीजें पूछेगा.
राइट, और आप आंसर तभी कर पाओगे जब आपने खुद से सारे रूट खुद ट्रेवल किए हो। Yes, sir. Got my point? Yes, sir. Yes, sir. Any question which I can answer? सर एक चीज बता दीजिए, वो वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए जो आपने किया था वो जस्ट वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल करने के लिए बहुत छोटी सी ट्रिक है। डेटा सेलेक्ट कर ले, जिस भी डेटा को आपको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना है, कंट्रोल सी से, राइट, यस, और प्रेस करना ऑल्ट की ESE। ESC ये कीवर्ड से या कोई शॉर्ट? अगर वह उससे भी नहीं कर पाओ, आप यहाँ पे जाना, पेस्ट स्पेशल में जाना, क्लिक करना और ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना, आपका डेटा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। सेलेक्ट करने का क्लिक ऑन पेस्ट, गो टू पेस्ट स्पेशल और ये ट्रांसपोज। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने इसका शॉर्टकट यूज किया था बस। ओके सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? The shortcut is Alt plus ASC. आई एम राइटिंग इट। ASC. ESE। All right, any other question? No, sir. All right, so people who have not joined the Telegram channel, please join that official channel, right, so that you get all the information. And thank you for joining in. Stay safe, stay healthy. Bye bye, take care. Thank you, sir. थैंक यू सर। 2 बजे तक नहीं सर आज क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. थैंक्स।